हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनाइटेड रोड। चेल्सी वाले मैच के बाद यार एक दिन का ब्रेक चाहिए था मुझे, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट डे ऑनलाइन आता तो भाई इतनी चीजें थी बोलने को, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। बट उस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे आज। बट यस, बिफोर वी कैन इवन कैच अ ब्रेक वी हैव टू फेस लिवरपूल। ठीक है, हमारे लिए इस गेम के क्या इंपॉर्टेंस है आई डोंट हैव टू टेल द प्लेयर्स। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो कि उनको खुद को रियलाइज होनी चाहिए। ठीक है, ऑल तो उनको होगा नहीं, बट स्टिल व्हेन आई से दैट एज अ टीम we have failed with multiple things. One of those things is basically understanding the importance of certain games. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंड दैट्स व्हाई वेयर वी आर। ठीक है, इंजरीज वगैरह की बात करेंगे यार, बट इंजरीज आर नॉट गोइंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम बीटिंग ब्रेंटफोर्ड और बीटिंग यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट फुलहम। इन सब टीम्स को तुम बिना इंजरी मतलब इंजरी के साथ भी you should take care of these teams. ठीक है, but चलो we will talk. Ratin bhai, welcome to the stream. Fair enough, Dipesh bhai, that's a good one. No honest thoughts. I had no honest thoughts last time as well. Honest thoughts कुछ नहीं होता भाई. As fans we want all the games to win, but at this point of time which United will show up किसी को नहीं पता. Nobody gave a chance to us in the FA Cup. We showed up at the FA Cup, we got the job done, and then we played the way we played against Brentford. तो इस टीम के साथ तुम्हें क्या मिलेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भगवान जाने। चलो ये बना ही देता हूँ एक पोल भी। नहीं, टॉप 5 तो मैं सोच ही नहीं रहा यार, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर। ठीक है, at this point of time if you can get the FA Cup trophy somehow I will take it. Next season focus on the league, get the players. If we are going to the Europa or the conference I don't care, play the kids, have them some game time, focus entirely on the league. I don't want conference, I don't want Europe. I have been very clear about it, Rathin bhai. I see a bit of backlash when I say that I don't want Europa or conference. They're like, our revenue will be less and all that. I totally get it. But then I'm talking about myself. I don't want Europa or conference. Next season, start fresh. Absolutely fresh. So that's what I'm thinking about at this point of time. Nah, I don't think so. If Ineos are thinking that we are going to get top 4, they have absolutely zero knowledge there. Of course, removing players. How many managers you going to keep on removing? You bring in a new manager, the same players will be there, they will do the same thing, and then again change of manager, change of manager, change of manager. How many times? एक ही चीज एक ही प्रोसेस कितनी बार दोहराओगे? और प्लेयर्स को कितना टाइम दोगे? लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट देके छोड़ दो। फिर जब मैनेजर पे मैनेजर ही बदलना है देन गिव द प्लेयर्स अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड आने दो मैनेजर को। क्या फर्क पड़ रहा है? एब्सोल्युटली। ईटीएच को लग रहा है कि भाई ये एडिडिविज है, जहां पे इंटेंसिटी ऐसा सच कुछ है नहीं गेम की। ये 2 साल में भी उसको ये बात नहीं समझ में आई। ठीक है, चलो इस साल तो मैं समझ रहा हूँ, इस साल तो रोटेशन के नाम पे हमारे पास कुछ है भी नहीं एज सच। ठीक है, बट इफ इट डज इट अगेन नेक्स्ट सीजन एंड इफ वी हैव प्लेयर्स अवेलेबल तो फिर भाई मैं क्या ही बोल सकता हूँ। भाई वी विल नीड 3 सीबीज। ठीक है, 3 लाने पड़ेंगे। इवांस इज गोइंग आउट, लिंडलॉफ वी शुड सेल। वरान का जिस तरीके से लग रहा है आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू गिव हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स माय जस्ट पर्सनल फीलिंग कि उसकी इंजरीज की वजह से शायद हम उसको नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ऑफर नहीं कर रहे एंड आई थिंक ही विल एंड अप लीविंग। बेंच, दैट्स हिज फ्यूचर।
यू नो nobody is going to pay the amount that we want. Let's be honest about it. एक ही टीम है जो उसको लेगी, that's PSG. वो उनका मूड करेगा, they might end up paying 100 million. अगर कोई दे रहा है तो भाई उसको वहां पे छोड़ के आओ. मैं ठीक हूँ भाई, how are you? नहीं भाई, चेल्सी थोड़ी बनना है हमें. चेल्सी की हालत देख लो ना. वी कैन नॉट डू दैट. उतना पैसा नहीं है हमारे पास. ठीक है, यू हैव टू फेज आउट प्लेयर्स. एक एक विंडो बाय विंडो यू हैव टू फेज आउट प्लेयर्स. एक विंडो में यू आर टॉकिंग अबाउट फेजिंग आउट 15 प्लेयर्स. नॉट गोना हैपन विथ मैन यूनाइटेड. इट्स एज सिंपल एज दैट. क्योंकि हमारे प्लेयर्स की उस तरीके से मार्केट वैल्यू भी नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. नहीं भाई, उसको नहीं देंगे. सी द रीजन बीइंग, अगर तुम उसको रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हो, लाइक इफ वरान इज फिट, ही इज आवर बेस्ट डिफेंडर. इट गोज विदाउट सेइंग. बट वही है, फिर अगर फिटनेस का इशू हो रहा है भाई, हमें 3 बंदे चाहिए ही चाहिए. इट्स मिनिमम 3 सेंटर बैक्स. वी नीड अ लेफ्ट बैक, वी नीड अ राइट बैक. डलो का मैं तभी बोल रहा हूं कि भाई 3 months is not the criteria. I'm not hating on Delo. I will never hate on any United player यार. But let's be honest, 3 महीने का सीजन नहीं होता कहीं पे भी. भाई, we will need at least 6 or 7 players if we are letting go of certain players. हमें लेफ्ट बैक इज अ मैंडेटरी नीड. चाहिए ही चाहिए. डीएम चाहिए ही चाहिए. 2-3 सेंटर बैक्स चाहिए ही चाहिए. We are talking about 6-7 players minimum, and we can do it if we move quickly, move efficiently. तुम्हारा एक सेंटर बैक तो मान के चल लो यार, टॉसिन है. ही इज अ फ्री एजेंट. उससे बात करने में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? उसने बोल दिया ही इज नॉट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद फुलहम. ही इज 27. क्या प्रॉब्लम है? भाई, सैक द मेडिकल टीम. मैं कब से बोल रहा हूं, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई बंदे की इंजरी है क्या. इमेजिन द क्लाउन स्टेट ऑफ आवर मेडिकल डिपार्टमेंट. क्या बोलूं मैं इस चीज पे? कैसेमीरो को इंजरी है. कैसेमीरो को इंजरी जो है वो बारसा का डॉक्टर बता रहा है कि भाई तेरे को ये इंजरी है, मत खेल. हमारे वाले चिल्लम मार के बैठे हुए हैं कैरिंगटन में. ऑफ कोर्स वेरी सिली भाई. ही विल बी कॉल्ड आउट फॉर दिस एंड एब्सोल्युटली फाइन विद दैट. राम राम भाई, क्या हालचाल भाई? करना देखो, 5 करना पड़ेगा. 5 तो तुम्हें करने ही करने हैं. अब तुम 2 सीबी करो, 3 सीबी करो, बाकी की चीजें जो भी करो. ऑफ कोर्स भाई, देखो स्टाइल ऑफ प्ले तो नहीं बना. ठीक है, फर्स्ट सीजन से सेकंड सीजन में स्टाइल ऑफ प्ले बनने का लोग उम्मीद कर रहे थे. बट देन व्हेन यू डोंट हैव अ प्लेइंग 11 अवेलेबल थ्रू आउट द सीजन, प्लेइंग स्टाइल नहीं बनेगा. बट सेइंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ प्लेयर्स के साथ ऑब्सेशन, इट हैज कॉस्टेड अस गेम्स. सिंपल सी बात है, कसम से. हाँ भाई, लिवरपूल फैन था वो. क्या बोलूं मैं भाई? तुम अभी भी हमसे नीचे हो यार. तुम क्या, चेल्सी वाले फैंस क्या बात करेंगे यार. रहने दो. ठीक है, ये एल लेने के बाद 7 साल में पहली बार जीते हो. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट एनीबॉडी शुड नॉट सेलिब्रेट द विन. कि एल क्या होता है भाई? 100 चीजें गिना सकता हूं मैं मैच में रेफरी के बारे में, बट वो चीजें मैं करता नहीं. वो चीजें मैं करता नहीं क्योंकि रात गई बात गई. एग्जैक्टली, चेल्सी फैंस एल की बात कर रहे हैं यार. तुम्हारे पिछले 2 साल क्या, उसके पहले से एल लगे पड़े हैं. एफए कप देखो यार, एफए कप, if Chelsea can do something against City, which they are capable of, they have shown it. ठीक है, बट वही है, वन ऐसे गेम में जहां पे यू नो कि यू लूज, यू आर आउट. ठीक है, एंड विथ अ ट्रॉफी ऑन द लाइन, एनीथिंग कैन हैपन. चेल्सी ने वो दिखाया है पहले, यूनाइटेड ने दिखाया है वो पहले. वी हैव सीन, एफए कप, कप मैजिक इसीलिए बोलते हैं यार. At times nobody has given the teams chances and they have come up with the wins. So
वही वाली चीज बोलूंगा मैं, एफए कप कैन बी एनीबॉडीज। वो चेल्सी जीत सकती है, वो यूनाइटेड जीत सकती है, वो कोवेंट्री जीत सकती है, वो सिटी जीत सकती है। आई एम नॉट गोइंग टू काउंट आउट कोवेंट्री यार, सिंपल। मैं उनको भी काउंट आउट नहीं करूंगा, विगन ने दिखाया है पहले, बात बराबर है वो, ठीक है। तो एफए कप में मैं किसी को ये नहीं बोलता कि भाई बिफोर द फाइनल विसल इज ब्लोन यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, ये नहीं होने वाला। रोटेशन तो है। थॉट्स ऑन राशफोर्ड भाई, देयर इज अ रीजन ही वाज ऑन द बेंच। ही माइट कम बैक अगेंस्ट लिवरपूल, but the more he's on the bench the better I will feel, because I did not see any effort apart from that 95th minute backtrack on the right hand side। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिखा भाई। ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं इस चीज में भाई। देखो, दोनों पेनल्टी सॉफ्ट बोल सकते हो, ठीक है, दोनों बोल सकते हो। when you compare the decision that has gone against us, तो फिर मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। अगर अपने से कंपैरिजन करने बैठ जाऊंगा फिर तो श्योर शॉट पेनल्टी नहीं है, ठीक है। इफ यू आर लुकिंग एट द पेनल्टी दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड थ्रू आउट द सीजन, नहीं खोलेगा भाई। और इनके ये रिजल्ट देखे कहीं लिवरपूल वालों का खून ना खोल जाए और कल हमारी बजा दे वो। आदित्य भाई, आई वोंट बी सरप्राइज्ड, आई एम हैप्पी, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी। भाई किसी का कमेंट मिस हो जाए वापस डाल देना। शैन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। शैन भाई एक ही चीज बोलूंगा यार, देखो पता है क्या, ओल्ड ट्रैफर्ड पे वी हैव सीन सम मैजिकल रिजल्ट्स ओवर द इयर्स, ठीक है। ओल्ड ट्रैफर्ड पे we turn up at times where even as United fans I don't expect them to, but then वही वाली बात है, that happens once in a blue moon। जो एफए कप वाला गेम था, we play like that we will end up stopping Liverpool, but फिर वही वाली बात है, वो खेल के हमें लगा कि भाई हो गया भाई, जीतेंगे आराम से तो हम किसी से नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, चेल्सी एंड यूनाइटेड दे आर नॉट गोइंग टू विन किसी के अगेंस्ट इजिली, जो उनकी हालत है अभी। लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स, he will start here, but I will I because Garnacho almost played 90 minutes, ठीक है, so he might just get a bit of rest, but apart from that I see Rashford on the bench। I think Garnacho might start, Anthony the way he played, Anthony might start। Ayush bhai welcome to the stream। Exactly। थैंक यू भाई। भाई देखो वही वाली बात है, आई एम नॉट इवन गेटिंग इनटू द रेफरीज डिसीजन यार, ठीक है, वो पूरे सीजन की कहानी है वो। एंड आवर मैनेजर इज एब्सोल्यूट टूल फूल, जो बोलना है बोल लो। ही हैज नॉट टॉक्ड अबाउट इट एट ऑल। उसको लग रहा है भाई फाइन कर देगी, अब अबे तेरे को फाइन लेने से क्या प्रॉब्लम है भाई। जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रेफरीज डिसीजन द वे द अदर मैनेजर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट। उसको पता नहीं क्या मौत आती है भाई। आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन भाई। देखो मैं तभी एक ही चीज बोलता हूं, आई हैव स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रिजल्ट की भाई। हम टेबल पे कहा, एज आई सेड इट्स एफए कप और बस्ट, ठीक है, ये सीजन, एंड दैट्स फाइन। एट टाइम्स एज अ क्लब यू नीड दैट सेटबैक कि भाई पीछे बैठो, डाइव डीप एंड थिंक ऑफ व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। क्योंकि भाई तुम चलो, आई गेट कि भाई चैंपियंस लीग चाहिए, पहुंच गए तुम चैंपियंस लीग, क्या उखाड़ लोगे मेरे को बता दो। कोई मेरे को इसका जवाब दे दे। चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर गए, चलो ठीक है, एडिशनल रेवेन्यू आ गया, हमने एक प्लेयर एक्स्ट्रा उठा लिया, वी आर नॉट रेडी फॉर चैंपियंस लीग। आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, आई एम जस्ट बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे स्टार्ट अगेन। मैं तो तभी तो बोला भाई, रेफ की तो मैं बात ही नहीं करता। टीएल में ये इनको इनको लग रहा है ना, इनको पता है कि भाई दे आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू टॉप 4, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो दे आर लाइक चलो कोई दिक्कत नहीं है, हट जाने दो। अरे ये जो जो कुछ जीते नहीं अपनी जिंदगी में वही दूसरों को ज्ञान देते हैं,
ठीक है भाई, ट्रू यूनाइटेड मैनेजर तो कोई भी ऐसा बोल नहीं सकते कि ट्रू है नहीं है। ही शुड हैव बीन वोकल, इतना जरूर बोलूंगा। एग्जैक्टली, ही जस्ट स्टेज सो क्वाइट। या तो उसको पता नहीं है कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है, और ही जस्ट डजंट केयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि चलो भाई रहने दो। आई एम एब्सोल्युटली फाइन राम भाई, हाउ आर यू? एग्जैक्टली, दैट विल ऑलवेज बी देयर विशाल भाई, लेट्स गेट यूज्ड टू इट। एग्जैक्टली भाई, हफ्ता। ये नहीं समझा गौरव भाई, थोड़ा सा समझाओ मेरे को, थोड़ा सा समझाओ। अरे भाई ये देखो, अर्जेंटीनियंस की आदत होती है ये अपने ऊपर सब कुछ फोकस लाने का, ठीक है। एंजो फर्नांडिस अगले 8 साल में एक ट्रॉफी जीत लेना ढंग की, तो फिर बात करेंगे, ठीक है। 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना एंजो फर्नांडिस ने, अगले 8 साल में एक ट्रॉफी ढंग की जीत ले, फिर बात करेंगे। भाई रेफरी का नाम लेके तुम्हें कॉल आउट करना पड़ेगा, बैड रेफरिंग डिसीजन से कुछ नहीं होता। दिव्या भाई वो वहां बैठ के बोले रेफरी नो डिसीजन हैज गॉन अगेंस्ट अस, रेफरीज को फर्क नहीं पड़ रहा। बोलो कि साला पॉल जिलेट या जो भी उसका नाम है, ऑस्ट्रेलियन, बोलो बिकॉज ऑफ हिम वी लॉस्ट द गेम, नेम नेम एंड शेम। नहीं सुधरेंगे रेफरीज जब तक तुम उनका नाम लेके उनको नंगा नहीं करोगे। लिख के ले लो। हाँ, तुम्हें 25,000 या 20,000 पाउंड का फाइन जरूर देना पड़ेगा नाम लेने के लिए। दो ना यार, एक दो बार ही दो, उतने में उनकी नानी याद आ जाएगी। तो भाई उसकी अभी औकात वही है ना, खेल पा नहीं रहा तो क्या करेगा, फोकस तो चाहिए ना, कैमरा पे तो चाहिए उसका फेस। जिनसे पिच पे कुछ किया नहीं जाता वही लड़ते हैं भाई दिन भर। भाई आई थिंक वी विल चैलेंज, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफर विंडो यार, ठीक है। दीपेश भाई मैं बता रहा हूँ, जितने डिसीजन हमारे अगेंस्ट इस गेम में इस सीजन गए हैं ना, मोरिनियो कम से कम 10 फाइन लेता, बट एक एक को नंगा करता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक एक को नाम लेके। ऋषि भाई देखो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रेफरीज गेटिंग हाउंडेड और अब्यूज्ड, ठीक है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भाई दे नीड टू अंडरस्टैंड कि तुमने अगर ईयर आफ्टर ईयर इफ यू आर रूइनिंग समबडी चांसेस, ठीक है। रोमा पूरा का पूरा एंथनी टेलर पे है, रोमा लूजिंग द यूरोपा फाइनल, पूरा का पूरा इट्स ऑन एंथनी टेलर। या आई डोंट सपोर्ट द हेकलिंग बाय द फैंस जो रोमा के फैंस ने किया, बट भाई दे आर ह्यूमन बींग्स एज वेल, और उनको जो उस तरीके से फील हो रहा है उस टाइम पे, तुम तो भाई एक गेम रेफरी करके निकल गए। देयर फैंस दे डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू रीच अनदर यूरोपियन फाइनल इन देयर लाइफ टाइम और नॉट। ठीक है भाई, हैट्रिक इज हैट्रिक फॉर मी, ठीक है। सो वो लेफ्ट फुट हो राइट फुट हो, परफेक्ट हैट्रिक हो ना हो दीप भाई, ये रहेगा ही स्कोर्ड अ हैट्रिक। बिल्कुल भाई, बिल्कुल होना चाहिए। यप, एंथनी टेलर है भाई, 100% दिया था भाई। एंथनी टेलर, माइकल ऑलिवर, ये साले एक नंबर के टॉप लेवल के, क्या ही बोलूं मैं। अरे हार्वर्ड वेब वेब भाई, भाई आई एम नॉट सेइंग कि भाई जहां पे यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें सपोर्ट करो या उस तरीके से, बट एटलीस्ट बी जेन्युइन। मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम आओ और तुम सामने वाली टीमों को हरवा दो। ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सेइंग इज कि भाई अगर तुम आ रहे हो, इफ यू आर अ रेफरी, डू इट प्रॉपरली।
यही तो बात है भाई, यही तो नहीं होता यहाँ, कुछ नहीं होता। एक मैच के लिए बंदा डिमोट होता है ऋतिक भाई, अगले मैच में वापस आ जाता है। भाई he can do it. It's just he needs to believe in himself a bit more and take a bit of a risk. रिस्क का मतलब ये नहीं कि मैकटोमिने को स्टार्ट करा दो, वैसा रिस्क नहीं। एक गेम के लिए हुआ था भाई, फिर वापस आ गया। अग्रीड। भाई कैसेमिरो हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ रेफरीज एंड इंजरीज। आई थिंक he will be one of the names who will be out of the door next year for sure. At Old Trafford, magic is always a possibility. And since we have just one motive this season, that is basically to stop them from winning the title, we should go all guns blazing. हमारे पास we have nothing to lose यार। तू 6th आओ, तू 7, तुम 7 आओ, किसको फर्क पड़ रहा है? कम वाला स्टार्ट करेगा, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है भाई। वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? शुड के स्टार्ट टुमारो? नहीं भाई, आई वोंट स्टार्ट कैसेमिरो। एग्जैक्टली। अरे भाई 5 बंदे पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन उसके पास जा कोई नहीं रहा है। दत्ता भाई, आई टोटली एग्री। As I said, I will sell at least 4 to 5 players without even thinking twice if the price is right. If somebody wants me to sell Rashford for 50 million and McTominay for 20 million, they can fuck off. Absolutely fuck off. Zero. He is not going anywhere. Everybody knows it. He will get one season with Ineos and then Ineos will decide. He is not going anywhere, भाई। लाउरी ने भी बोल दिया, स्काई कब से बोल रहा है। In my opinion as well, he is staying unless or until जिडान कहीं से आ जाए और बोले कि आई गॉट दिस, फिर मामला चेंज हो सकता है। Casemiro, Varane, Sancho, Lindelof, McTominay, Martial. I don't have a problem with any of them going out. I will add Rashford as well. If we are getting 100 million, to be very honest. If we are not getting that much money, then I'm not selling Rashford. Simple. Kenny, man, thanks a lot for joining in. Really means a lot. But I have not seen a single report that we want Rodrigo. Not a single report. I did not know it, by to be honest. भाई आई डोंट डू नेम कॉलिंग। जो नेम कॉलिंग करता है मैं उसके कमेंट्स में नहीं लेता यार। रैशफोर्ड को ट्रैशफोर्ड बोल देने से कुछ होना नहीं है। आई विल टेक 100 million इफ मुड्रिक हैज बीन बॉट फॉर 100 million, एंजो फर्नांडिस फॉर 120, काइसेडो फॉर 120, आई वांट 100 million फॉर रैशफोर्ड और ही स्टेज। सिंपल भाई। आई माइट जस्ट मैं क्या ही बोलूं। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग दैट माइट जस्ट even rile me up more. My penalties are disrespected because देखो डिसरिस्पेक्ट तो नहीं बोलूंगा, बट यस, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ पेनल्टी प्रॉपरली देन डेफिनेटली इट्स सीन इन दैट वे। लाइक बोथ द पेनल्टीज, इट शुड नॉट हैव बीन अ पेनल्टी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इट्स ओके मितुंजय भाई, दैट्स द स्टोरी ऑफ आवर सीजन, दैट्स फाइन। अरे भाई ही इज गोइंग टू बी इन हिज प्राइम। 27 साल का है मुड्रिक। मुड्रिक की एज क्या है? 5 साल का डिफरेंस है भाई। मुड्रिक ने क्या उखाड़ा है? रैशफोर्ड के 6 में से 4 सीजन है 20 गोल प्लस असिस्ट के। So 70 for them definitely. Exactly. Facts.
Kenny, to be very honest, as I said, I don't expect, and I'm not doing the watch along tomorrow. I don't have the guts, being very honest. But if we can come out with positive result, I will definitely do a stream after the game. Instantly, like 10-15, if we can get something positive. But yeah, as you said, I don't have any hopes. I did not have any hopes in the FA Cup as well, but somehow we got the job done. I don't know how. So keeping fingers crossed. Right? That's where your manager gets in. That's where your manager needs to go out and say, you know what? Enough is enough. Enough is enough. This guy, this guy, this guy. Explain how is that a penalty. Yes, you will be fined. तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा. Pay the fine once or twice. The referees अपने आप सही हो जाएंगे वो. उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है. भाई देखो, डूबियस डिसीजन वाले पेनल्टीज जो हैं, दे विल ऑलवेज बी मॉक्ड. सिंपल. ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर. मैं ये चीज 100 बारी बोल चुका हूं और मैं ये बोलता रहूंगा. He is not going anywhere unless or until we are receiving the money that we want. Fair enough. Left back, by lot of problems so far. Vishal bhai, totally. Yeah, of course he needs to. He needs to. मैंने स्ट्रीम पे भी बोला वो कि at this point of time we are getting the same vibes in penalties that De Gea used to give us throughout the game. Throughout the game, Gallagher should have been sent off. So that's why I don't talk about referees' decisions, because it's common with us. It happens all season long. Yeah, he was always a bench player. Yeah. If you take my any stream, I said if we are not getting the money, it's okay if he's a bench player. My preference is if he gets sold, get somebody who is better than him, not somebody who is at par with him. भाई देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हें एकेडमी यूज करना ही पड़ेगा इफ यू डोंट हैव द प्लेयर्स अवेलेबल. इनके डिल्यूजन का कोई लेवल थोड़ी है भाई. But I think the next few games that he plays decides whether he stays with us or whether he goes on a loan. We need at least 4 players for midfield and defense, even 5 to be honest. We need 2 center backs, we need a left back, we might even need a right back, and we need a CDM. So that's like 4 to 5 players. Not sorted yet. On paper, on the it looks sorted, but at this point of time, officially it's not sorted. I will replace Bruno, or I will play Mount, Mainu, and Bruno. Since this was the thing that we wanted to do, this was the thing that Eric Ten Hag wanted to do, and that's why he brought in Bruno. If he's not going to do it, then why the fuck did we pay 60 million for him? Somebody make me understand. Wilcox coming definitely. Ashworth most likely to get in, but बिना पैसे के नहीं आएगा. If we are thinking that we can somehow talk Newcastle into, getting us Ashworth without the compensation, not gonna happen. Hello Jay bhai, welcome to the stream. But I think we have already sent him on 2 loans, so nothing can be done about it. उनको ही तो पैसे कमाने हैं भाई. Exactly. अगर उसको तुम नहीं खिला रहे हो behind Bruno alongside Mainu, what's the logic? At least it should be tried, Kenny. That's what I'm saying. If you are not trying, you won't know. It's as simple as that. Alvaro आएगा, but I need a proper left back. Go for Anthony Robinson. Alvaro को एक proper loan पे भेजो, and then we will get to know. उसको चैंपियनशिप में लोन पे भेज दो यार.
और विथ अ मिड टेबल प्रीमियर लीग साइड, वो खेला ही नहीं है। वो wherever he has gone on loan, he has barely played. पता नहीं भाई, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है तो छुट्टी का तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। They demanded 20, but I think we can get him for like 10, but we are not even getting, we are not even willing to pay 10. So I don't think so. I think 30 to 35 if we negotiate properly, because when we make a bid for Robinson, Robinson will say, I want to move out. Exactly भाई, people don't understand that. मैं समझा समझा के थक चुका हूँ भाई। अब है ना फिट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लिवरपूल गेम के लिए तीनों फिट हैं, प्ले देम। वी आर एक्सपेक्टेड टू लूज एनीवे। इंटर मिलान, आई विल गो फॉर थुराम, परफेक्ट बैकअप स्ट्राइकर। ठीक है, मजा आ जाएगा मेरे को। एसी मिलान, राइंडर्स फ्रॉम मिडफील्ड, आई थिंक ही हैज द पोटेंशियल। रियल मैड्रिड, यार इसके लिए तो कोई, मैं क्या ही बोलूँ, आई विल स्ट्रेट अवे गो फॉर विनीशियस, कोई डाउट भी नहीं है। आर्सेनल, डेक्लन राइस। बार्सिलोना, फ्रैंकी डियोंग ऑब्वियसली। एथलेटी, नोबडी। चेल्सी, नोबडी। चलने दो भाई, मैं तो घर पे हूँ, चिल कर रहा हूँ, आराम से बैठूंगा भाई। We can play that midfield because then we will have three workhorse for the midfield. The midfield that we are trying to play right now, उनमें कोई भागने जैसा है ही नहीं। माउंट कम से कम तुम्हें भागता रहेगा पूरे 90 मिनट, ब्रूनो भागेगा, माइनू भागेगा, मैकटोमिने बॉल के लिए दिखता नहीं, कैसेमिरो से अभी भागा जा नहीं रहा। यमाल, यमाल ले सकता हो बारसा से, ध्यान से निकल गया था भाई। भाई कितना टाइम लोगे, कितना स्लो करोगे? ही इज ट्रेनिंग फॉर 3 वीक्स, अब कितना टाइम चाहिए? एब्सोल्युटली भाई, ये तो सब कुछ कर लेगा। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ टीम प्लेयर भाई। व्हेन यू डोंट हैव अ मिडफील्ड ना, दैट्स द प्रॉब्लम दैट यू फेस। नहीं भाई, नो, नॉट अराउगो। यमाल, आई थिंक आई विल गो फॉर यमाल और फ्रैंकी डियोंग, नॉट अराउगो। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। माउंट का पासिंग एबिलिटी इज गुड, ठीक है। He can be a menace in terms of his work rate. He will keep on running, keep on trying to get the ball. So these are the things that we need actually. ना, नो मोराटा और ग्रिजमान, नो। मोराटा तो जिंदगी में मैं किसी से मैं तो दुश्मन को मोराटा सजेस्ट ना करूं। ग्रिजमान मे बी, बट ना, ही कैन। मालो गुस्तो मे बी। रीस जेम्स इफ फिट मे बी। Diong or Rabiot. Diong will cost a lot of money. The baggage with Rabiot is too much, Kenny. Just too much. We don't play him one game, his mom will come out in the press conference and he will be like, the manager is so rubbish. They have an agenda against my son, blah, 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 blah. I don't want that sort of nonsense for the next season. Not in my opinion. ओब्लाक का लेवल बहुत गिरा है भाई पिछले 2 साल में। ऑल गुड भाई, हाउ आर यू? ओह सॉरी, because he was under a long term contract, Nikhil bhai. That's the problem. ठीक है,
So they are asking, and since you know, it, according to them, he is moving to a rival club, so the price is justified. वो अपने आप में rivalry बनाते रहते हैं, जैसे पाकिस्तानी है ना, इंडिया इंडिया, वैसे ही न्यूकासल, मैन यूनाइटेड आवर राइवल्स. सो वेलकम भाई, वेलकम. क्या हालचाल सक्षम भाई? Exactly, that's the problem. We are rubbish on the ball, man. You know, as I said, it also comes down to the confidence, Bora bhai. You are facing almost 30 shots per game, in the last few games. क्या करेगा वो? I'm not saying कि वो सेव नहीं कर सकता था पहला गोल, but and after that he made 3-4 nice saves. But that's what I'm saying. Even for the final goal, he could not have done anything. Penalties, he can be definitely better. Not 20 million, but we should get it done for like 10 to 12 million. I don't want Cole Palmer, yeah. Thanks a lot, Badam. Anybody who's joining in really means a lot. See, that's the thing. The consistency is the problem. And it is the problem with 90% of our players. Even more than that. भाई देखो, 2-3 जाएंगे, बट देखो एक होता है ना, that's a first goal. It should not have been a goal, Ritik bhai. Let's be honest. ठीक है, he should have saved that first goal, Onana. Second goal, third goal, fourth goal, he could not have done anything. Like penalties, it's on luck. You can get a hand, you cannot get a hand. Try to at least go in the right area. That is where my problem is, that he's not able to even identify the side. So है भाई है, because we don't have a midfield. See, you need to understand, shots doesn't mean shots on target. It's just shots towards your goal. So anybody at this point of time, okay, if I get a ball, suppose if I am a rival, opposition player, if I get the ball in the midfield, I know nobody is coming to mark me. I know nobody is like even in like 15-20 yards. I can just take a shot. If it goes in, it goes in. If it doesn't go in, fine enough. But if I have the opportunity, like when you look at United, when our players take the shot, you will always find 4 guys in front. Look at when their players take the shot, we have nobody. 5 players. 5, even more than that. From the penalty box, they are showing the finger on Cole Palmer before he's taking the shot. Not a single of them went over there and tried to get the ball back. I don't know what to say. कोई ना भाई, डिप्रेशन का तो कोई नहीं बोलूंगा. Cup Miners, if he's ready to take a bench role, fair enough, भाई. I will take him. No, that's why I'm not saying anything in terms of, I'm not pinpointing a player. Lot of players made mistakes. Exactly. 100%. Van Bissaka is fit. Exactly, Avinash, that's what I'm saying. If you are giving so much time and space to the players in front of you, of course, short pe shot, it's never gonna stop. They need to watch football, Desmond. That's what I'm going to say. With all due respect, with what KDB has done, he's not better than Prime Kaka. Nah, not at all. It's recency bias, as Ratin Bhai said. Nobody at this point of time, whoever is in the chat, and if they have seen Prime Kaka, I'm not talking about Kaka of Madrid. I'm talking about Kaka of AC Milan, the prime one. That guy was a totally different beast altogether. Exactly.
I have been saying this for a while now. There are mistakes in every player on the pitch for us. Every player. Dalot has been our best player, but for 3 months. Can he overrated? I think he has justified the money that they paid for him. He has created his own legacy. You know, it's just he just plays in one of the top teams. So at times, even if he is not doing 100%, he will still get the praise. But I don't think he's overrated. Not at all. Like overall in terms of what? In terms of maybe he might play more years than Kaká. That's where he might be better. But that's it. Ozil any day, bhai. KDB or Modric. Modric, yeah. It's not even for debate. Modric is one guy who can do it all in the midfield. And with such a short stature. He was never the quickest, never the fastest. But this guy, he can do it all. Simple. In the meanwhile, guys, those who are here, and I just want to say it once. If you want to take the membership, please do that. Try at least once. If you don't like it, let me know what changes I can make. But we have, as I keep on saying, we have 50 plus members, who are regular. In between, we have some gifted memberships as well. So try it at least once. If you like it, then continue with it. If you don't like it, at least let me know what I can change with it. So exactly. नहीं है ना भाई देखो वही तो बात है when you are playing a one man midfield that's what gonna happen. Mainu is all alone you cannot expect a 18-year-old to do everything. I will believe in him till the next season at least 100%. I don't think it's even up for debate, Modric or KDB. By Gillett, I have not seen play. Zidane, I have seen a bit of him, not a lot. So, मैं वही बोल रहा, you cannot keep on starting from zero. Understand that. At times you just need to step back in terms of enough of the players dominating our dressing room. What we want that okay, now it's the time that we let manager do his thing. मौत का खेल. It really means a lot. I think it's 19 months now if I'm not wrong. You might just get your milestone chat very very soon. So Ali, Malin, Celia, like you have been here for 19 months. Jehan Bhai is there for 19 months. So and in recent months we have Samir Bhaiya and few other people as well. So yeah, I don't want to forget this name, Praful Bhai. He always faces the problem with autopay. He always go back and he always takes it back. So acha, I thought 19. If we back this manager properly with proper signings, I think 3 years we can do it. I will be very honest. 3 proper windows we can do it. City to win, yeah. City to definitely win this game. They rested Haaland, they rested KDB. Both are back. It's going to be a very long 90 minutes for Palace. Definitely in terms of trophies, it was Mourinho. But in terms of which football I enjoyed the most, it has to be Ole Gunnar Solskjaer. Nobody else. 100% he should stay at Bologna. Not even for debate. Ritik bhai, I totally agree. Even if we bifurcate
player by player. Sancho 40, Getafe Loni 40, Maguire 30, 35, McTominay 40. I'm not selling McTominay for less than 40, sorry. Lindelof 5 to 7, Donny 5 to 7. So that's like 40, 80 for them, 70, 150 here only. इन चार से ही आ जाएगा वो. 10, like इन दोनों का मिला के 15, इन दोनों का मिला के 10. So we can easily get 150 to 170. Not even 100 to 150. Exactly. 100%. We got a cup last season. We still have a cup chance this season. So, but I think he will come back. What are we going to do once he comes back? That's to be seen. One year, Benzema, no brainer. No brainer. Even if he's not giving us the goals, he will be such an impactful signing for the likes of Højlund. 30 नहीं देगा भाई कोई हनीबाल के. That ship has sailed by. Nothing's gonna happen with Qatar. It's in yours. Right, that's the thing. They cannot. भाई बेंजेमा तो फ्री में ले लो. ठीक है, if he wants to leave, if he wants to, if we can take him, fair enough. Wages का थोड़ा इशू रहेगा, so whether we can solve it or not, that's to be seen. But अब जो है सो है. So भाई, this is what I wanted to talk. The United game, team news prediction. Team news, we all know. Varane won't be available, and Casemiro, he has an injury issue as well. So I don't know whether he's going to be available or not. Evans might not be available. So the team that we ended the game with, majority of them are going to start. Keeping fingers crossed. Who would you keep out of Rashford, Casemiro, Fernandes, and Varane? Rashford and Fernandes, it's no-brainer. Casemiro looks absolutely finished. Varane with the injury problems, I don't think he's going to survive in the Premier League for more than one season. With all due respect, I absolutely love Varane. Want him to be here, but unfortunately, I don't see it for a longer period of time. Chalo, bye-bye. And, with this, I will be ending the stream. As I said, tomorrow I'm not doing the watch-along, but if we can get any sort of a result, whether it's a draw, whether it's a win, I will be here. I will be here for, the post-match for sure. मैं देखो ओल्ड ट्रैफर्ड पे क्या होगा क्या नहीं, nobody knows. Let's be honest. Nobody saw that we are going to score 4 goals against Liverpool. भाई इतनी हिम्मत नहीं है यार. इतनी हिम्मत नहीं है, and I don't wanna play with my mental health कल. ठीक है. So कल के लिए I am not going to do the watch along. If we get the positive result, और अगर अच्छा fight भी put up किया, if we end up losing, I don't have a problem. I will be here after the game straight away, 10-15. But I want to see some fight. That's what I want to see. Would I retain anybody out of Amrabat, Eriksen, Van de Beek, Hannibal, McTominay? McTominay, if I'm not getting 40, I will retain him. Amrabat, Eriksen, Van de Beek, Hannibal. Hannibal maybe because he's young. The rest can go. Exactly. Draw हो जाए तो मैं तो लेके भाग जाऊंगा भाई. भाई, we all need to do that. Mental health is more important at this point of time here. ठीक है. As I said, results affect us and it's not gonna change, but it totally depends on us how much we wanna get affected as well. So thanks a lot, Box. और जिनचेंको को क्या बोलूं, respect या dump. भाई जिनचेंको is a, जिसको हम बोलते हैं ना, सोशल मीडिया वॉरियर. ठीक है. I will respect जिनचेंको when he goes over there to fight. ठीक है. हवाबाजी वाली की बात नहीं करता मैं. The players who were playing in the Ukrainian league, they went out to fight. ठीक है. They did not talk about it. They did not wait.
So everyone is doing things in their own way. And I respect Zinchenko for sending aid, for sending money, but don't talk about fighting. You are not going to do it. Okay? The best thing you can do is basically go out and talk in a huddle on the on the ground. That's it. That's your level. So respect those who are fighting. You are not going to do it. We all know it. You have sent money, you have sent aid, and yes, that should be appreciated, but that's it. That's where you should draw a line. Don't talk about you are going to fight. If you actually wanted to fight, you would have gone. You won't have talked. Okay? So, chalo. Stay safe, guys. Premier League, then IPL, and all that. So, it's going to be a busy Saturday evening. Stay safe. I always say, have a great time with your family. Good night.